गौतम बुद्ध को देखते हैं हम लोग। बर्थ गौतम बुद्ध ओरिजिनली नेम्ड सिद्धार्थ, क्या कहा जाता था उनको? सिद्धार्थ। वॉज बॉर्न इन 563 BC लुम्बिनी में, बिफोर क्राइस्ट। 563 BC लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, नियर कपिलवस्तु, मॉडर्न डे नेपाल। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, मतलब द चीफ ऑफ शाक क्लैन, मतलब किस उसके चीफ थे? शाक के। एंड हिज मदर वाज माया देवी, आल्सो नोन एज महामाया। किस क्लैन की थी? कोलियान। पिताजी शाक, माताजी कोलियान। ठीक। माया देवी डाइड ए फ्यू डेज आफ्टर सिद्धार्थ बर्थ एंड ही वॉज रेज्ड बाय हिज आंट प्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ मैरिड यशोधरा, आल्सो नोन by other name like Gopa, Bimba and Bhadkachana at the age of 16. They had a son named Rahul. यशोधरा से उनकी शादी हो गई, उनको गोपा, बिम्बा और भद्दकच्चना का भी कहा जाता है। Renunciation and search for truth. Siddharth lived a luxurious life until 4 sights deeply impacted him. कौन कौन सा? An old man, a sick person, a deceased person, a saint. ठीक। These sight revealed to him the suffering of life, promoting him to renounce the worldly pleasure at the age of 29. Worldly pleasure at the age of 29. His departure from home is called Mahabhiniskarman. Mahabhiniskarman. In Buddhist text, he studied under renowned teacher, कौन? अलार कलाम, सांख्य philosophy, and Rudrak Ramput. He studied under renowned teacher Alar Kalam, Sankhya philosophy, Alar Kalam, Sankhya philosophy, or Rudrak Ramput, but found their teachings insufficient. Enlightenment. After 6 years of rigorous ascetic practices, Siddharth attained enlightenment at age of 35 under a peepal tree, Bodhi tree. कहाँ? बोध गया में। On the night of वैशाख पूर्णिमा। कब? वैशाख पूर्णिमा के रात को। He then became Buddha, meaning the enlightened one. Other name of Buddha include Tathagat, he who has won truth. Sakya Muni, due to his birth in Sakya clan. Tathagat and Sakya Muni. Teaching and first sermon. After enlightenment, Buddha started preaching his ideas. His first sermon, called Dharma Chakra Pravartan, turning the wheel of dharma, उनका पहला sermon था, was delivered to 5 Brahmin sannyasis at ऋषिपट्टन। कहाँ? ऋषिपट्टन में, जो आज सारनाथ वाराणसी कहा जाता है। ठीक। Buddha's teaching emphasized the 4 noble truths and 8-fold path to attain nirvana, liberation from the cycle of birth and death. ठीक है। सिंबल ऑफ बुद्धिज्म रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ। बर्थ के लिए लोटस एंड बुल। ठीक। ग्रेट डिपार्चर महाभिनिष्कर्म हॉर्स। इनलाइटमेंट निर्वाण पीपल बोधि ट्री। फर्स्ट सरमन धर्मचक्र प्रवर्तन व्हील। डेथ महापरिनिर्वाण स्तूप। महापरिनिर्वाण। बुद्ध continued spreading his teaching for about 45 years. He spent the 2nd, 3rd and 4th years of reign at Rajgiri. Bimbisar, the ruler of Magad, constructed a Mahavihar called Veluvan for his stay. Gautam Buddha died at age of 80 at Kushinagar, modern day Uttar Pradesh, around 483 BC. This event is referred to as महापरिनिर्वाण। ठीक। अब वो चारों दुख कौन से थे? चत्वारी आर्य सत्यानी। चत्वारी आर्य सत्यानी दुख, ट्रूथ ऑफ सफरिंग। लाइफ इन्वॉल्व्स सफरिंग, बर्थ, डेथ, एजिंग एंड सारो। समुदया, कॉज ऑफ सफरिंग। सफरिंग, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, डिजायर, तन्हा एंड attachment lead to suffering. Nirodh, end of suffering. Cessation of desire will lead to cessation of suffering. Nirodh, mag, path of
path to the end of suffering. Path to the end of suffering, eightfold path is the means to end suffering. मग दुख समुदय निरोध मग। ठीक, अब एट पाथ क्या है? इसको अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। चतवारी आर्य सत्यानी मतलब सफरिंग रहेगा, कॉज ऑफ सफरिंग रहेगा, फिर एंड ऑफ सफरिंग, पाथ टू द पाथ टू एंड द सफरिंग। अब एट पाथ क्या है? राइट व्यू, सम्मतिथि, राइट इंटेंशन, सम संकल्प, राइट स्पीच, सम वाका, सम राइट एक्शन, सम कम्मानता, राइट लाइवलीहुड, सम्मान, सम अजीवा, राइट एफर्ट, सम व्यायाम, राइट माइंडफुलनेस, सम सती, राइट कंसंट्रेशन, सम समाधि। 3 jewels of Buddhism: बुद्ध, द इनलाइटेंड वन, धर्म, टीचिंग ऑफ बुद्ध, संघ, मोनास्टिक कम्युनिटी। ठीक, बुद्ध धर्म संघ। बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल 483 बिफोर क्राइस्ट, हेल्ड एट राजगृह, लेड बाय महाकश्यप, पैटर्न अजातशत्रु। फर्स्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगृह, लेड बाय महाकश्यप। पहली काउंसिल राजगृह में हुई थी, महाकश्यप ने वो किया था 483 BC में, और पैटर्न कौन थे? अजातशत्रु। सेकेंड काउंसिल 383 में वैशाली, पैटर्न कौन थे? कालशोक। राजगृह वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्र, मोगलीपुट्टा टिस्सा, पैटर्न अशोक थे। फोर्थ कश्मीर, वासुमित्र ने लीड किया था, पैटर्न कनिष्क थे। ठीक, ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, थेरावादा, हीनयान, ओल्डेस्ट फॉर्म, प्रिवेलेंट इन श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, हीनयान। महायान, emphasizes the role of bodhisattvas, popular in China, Korea and Japan. Vajrayana, developed in Tibet, focuses on rituals and esoteric practices. Vajrayana. Significance, social impact, advocated equality, non-violence and ethical living. Cultural impact, art, architecture, stupa, chaitya, viharas and literature. Political influence, support from Mauryan Emperor Ashoka, who propagated Buddhism through edicts and missions to Sri Lanka, Central Asia and Southeast Asia. Travel and spread of Buddhism, after Rajgiri, Buddha reached Vaisali. ठीक, कैपिटल ऑफ लिच्छवी किंगडम। वैशाली कहाँ की किंगडम थी? लिच्छवी की। वेयर ही स्पेंड द 5th year ऑफ रेन। ठीक, लिच्छवीज बिल्ड द फेमस कुटागरशाला in Mahavan for his residence. Amarpali, royal courtesan of Vaishali, became Buddha's disciple and provided her Amarvatika garden for the residence of Buddhist monk. Amarpali, Amarvatika. Women in Buddhism. In the 8th year of enlightenment, on the advice of his beloved disciple Anand, 8th year of enlightenment, on the advice of his beloved disciple Anand, Buddha allowed women to enter Buddhist Sangh as Bhikshuni. Buddha's aunt, Mahaprajapati Gautami, who raised him after his mother's death, was the first woman to join Sangh. This step was revolutionary, providing women an opportunity for spiritual and social emancipation. Devdutt rebellion. Devdutt, Buddha's cousin, initially became his follower but later turned against him. He attempted to establish his own leadership over the Sangh by attempting to create a schism. However, he failed in his endeavors. Devdutt even attempted to physically harm Buddha but did not succeed. Buddha in Kosal state. Buddhism gained significant popularity in Kosal state. Anath Pindak, a wealthy businessman from Kosal, became a disciple of Buddha, donated Jitvan Vihar to the Buddhist Sangh. Anath Pindak. King Prasenjit of Kosal also adopted Buddhism along with his family. He constructed the Purvaram Vihar in Buddhist monks.
The last day of Buddha, the Buddha spent his last rainy season in Vaisali. While preaching, he reached Pava, where he stayed at the house of Chund, a blacksmith. He was offered a meal known as Sukarmadava, which led to his illness causing bleeding. Subsequently, he traveled to Kushinagar, modern day Kushinara in Uttar Pradesh, where he gave his last sermon to Subhad, Subhad, his final disciple. Buddha attained Mahaparinirvan, final liberation, in 483 BC at the age of 80. His death marked a significant event in Buddhism, symbolizing the end of cycle of rebirth and attainment of Nirvana. बुद्धा's फर्स्ट सरमन धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ सारनाथ में ऑल्सो कॉल्ड धर्मचक्र प्रवर्तन टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म द sermon addressed the suffering of human life, its cause and path of liberation. It introduced the fundamental teaching of Buddhism. Four noble truth. Chatvari Arya Satyan. Dukh, there is suffering. Samudaya, there is cause of suffering, desire or tanha. ठीक समुदय निरोध there is cessation of suffering through detachment. Mag, there is a path leading to the cessation of suffering, eightfold path. The noble eightfold path, Ashtangika marg, right view, Sammadhi, right intention, Sammasankap, right speech, Samvak, right action, Samkamanta, right livelihood, Samajiva, right effort, Samvayam, right mindfulness, Samsati, right concentration, Samsamadhi. ठीक. Reason for the spread of Buddhism. Simplicity of teaching. The teachings were straightforward and focused on ethical conduct, mental discipline, and wisdom. Non-violence, compassion, emphasis on ahimsa resonated with masses. Language of people. Buddha delivered sermons in Pali, the local language, instead of Sanskrit, making his teaching accessible. मतलब पाली में वो अपने मतलब सारे उपदेश देते थे. नो कास्ट डिस्टिंक्शन. बुद्धिज्म प्रमोटेड इक्वलिटी एंड वेलकम्ड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी including Dalit and non-Brahmins. Missionary approach. The Sangh community of monks actively spread the teaching across India and beyond, reaching central India, Sri Lanka and Southeast Asia. ठीक. Buddhism and missionary movement. Buddha encouraged missionary activities, sending monks to different regions to propagate dharma. Ashoka the Great, a Mauryan emperor, played a critical role in promoting Buddhism during 3rd century BC. Ashoka's missionary, including his son Mahind and his daughter Sanghmit, introduced Buddhism to Sri Lanka, resulting in the establishment of Theravada Buddhism here. Theravada Buddhism. Buddhist Council and Literature. अब देखते हैं क्या है. फर्स्ट काउंसिल 483 BC कहाँ? राजगृह में, अजातशत्रु के समय. कंपाइलेशन ऑफ बुद्धा टीचिंग इनटू सुत्त पीठिका एंड विनय पीठिका, मतलब कंपाइलेशन के लिए. सेकेंड काउंसिल 383 BC कहाँ? वैशाली, कालाशोक के समय. ठीक. डिवीजन इनटू स्थवारीवादीन्स और महासंघिकाज. ठीक. थर्ड काउंसिल कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, अशोक के मतलब पैट्रोनेज में. कंपिलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक एंड सेंडिंग ऑफ मिशनरीज टू फॉरेन लैंग्वेज, मतलब अभिधम्म पिटकों को फॉरेन लैंग्वेज में भेजा जाने लगा. फर्स्ट मतलब पाटलिपुत्र के बाद. फर्स्ट काउंसिल 1st सेंचुरी AD, मतलब फोर्थ काउंसिल, कश्मीर में कनिष्क के पैट्रोनेज में. फॉर्मल डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान. थेरावाद, मतलब महायान और
हीनयान या थेरावाद। त्रिपतिका मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपतिका कहा जाता है, और उनमें से कौन सा है त्रिपतिका में? सुत्त विनायक और अभिधम पटिका। सुत्त डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्ध, विनय मोनास्टिक रूल्स, अभिधम पिटका फिलोसफिकल एंड डॉक्ट्रिनल रिलीव्स। ठीक। Legacy of Buddhism, influence of Indian society, promoted social equality, ethical conduct, and spiritual liberation. Develop स्तूप, चैत्य विहारास एंड रॉक कट अजंता एलोरा सांची अमरावती। ठीक, तो ये इतना हो गया। अब अगला पार्ट हम लोग करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।